Question number 9 will be given a square a2 b square b2 c square c2 equal to a b c a minus b minus c c minus a. हमें देखिए टेकिंग करवा LHS साइड्स ऑफ डिटरमिनेंट एंड प्रूव करवा RHS साइड्स बुझे लगी नहीं. सो दैट डिटरमिनेंट विल बी गिवन a square a2 b square b2 c square c2. अच्छा रो 1 रो 2 रो 3 को देखो तो रो 1 रे हमें नहीं करबा कॉमन एटी होची a स्क्वायर a कॉमन नहीं करबा. सिमिलरली रो 2 रे b कॉमन नहीं करबा एंड रो 3 रे c कॉमन नहीं करबा. सो दैट एटा RHS साइड का देखिए बानो टेकिंग कॉमन ले लिखो रो 1 ले a रो 2 रे b and रो 3 c. So that is can be written in this process like a1 a square 1 b square 1 c square. बुझे लगे नहीं. अच्छा आसिगला कि हमर abc आसिगला फर्स्ट टर्म आसिगला कि abc आसिगला आसिबे कि a minus b minus c minus a just using the tricks. देखो एटी 1 1 1 अछि कि नहीं. अब एटी 0 0 कन्वर्ट कर परबा एटी 0 एटी 0 एटी 0 और इधर एटी दैट बोले दुईटा जगह 0 कर दो इन एक्सपांडिंग करबा इधर एलिमेंट करा मैक्सिमम मैं दुईटा 0 कर रो रे किबा कॉलम रे कन्वर्ट करबा चेष्टा करबा. देखो मु कोन चेंजेस कर रो 1 को चेंजेस करी अछि a - b दरकार हमर a - b आसीबो रो 1 को चेंजेस करी रो 1 - रो 2 रो 1 को चेंजेस करी कोन ना रो 1 माइनस रो 2 भल से देखो पहले रो 2 को चेंजेस कर दी देन आसो b माइनस c अछि तो रो 2 को चेंजेस करी कोन ना रो 2 माइनस रो देन ऑटोमेटिकली लास्ट टर्म विल बी गिवन अवर c माइनस a. रिजल्ट को सॉल्व करना इजी सो दैट इज कैन राइट डाउन लाइक दिस a b c and 1 minus 1 will be 0. This will be a minus b in a square minus b square. In second row will be 1 minus 1 रो 2 minus रो 3 तो 1 minus 1 0. जब वियोग करेगा देखो रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट 1 minus 1 0 b minus c b square minus c square 10. Third row will be same like 1 c and c square. Now देखो असले कि ना a b c 0 0 1 a minus b minus c c a square minus b square b square minus c square c square. अच्छा देखो एटी a minus b अछि तो एटी a square minus b square आपको फैक्टराइज करले पाइबा कोन a plus b into a minus b. So that टी फैक्टर कर दो a b c रो 1 0 a minus b and third will be a plus b into a minus b a square minus b square. And second row will be same way 0 b minus c same process that is b plus c and b minus c b plus c into b minus c. And third row will be written in same way like 1 c square. बुझे ना. अच्छा देखो एटी a minus b रो 1 को देखो एटी 0 a minus b 0 b minus c के रहा b minus c. अच्छा देखो एटी को अच्छी क्या हमारा a minus b तो 0 into something that is 0 so that we will put a minus b in रो 1 b minus c in रो 2 so that a b c a minus b taking को लिखो in रो 1 रे नदी के अछि a minus b let b multiply होछि तो a minus b कॉमन कर के also then you can multiply b minus 0 into something 0 so that b minus will be taken from a minus b in the road to recon na b minus c. Now alternate will be 0 1 0 1 a plus b
In second row will be 0, 1, b plus c. In third row will be same 1c c square. 1c c square. बुझाला? So that now देखो उधर column को देखो column वाले 0 0 1. So that now we can expanding along the column 1. Expanding along the column 1. Now expanding along column 1. The sign तुम्हारे माने अच्छी नहीं ये कौन है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस so that plus minus that is along the column 1 that I am expanding कर the last element will be plus with the sign plus so that a plus abc a minus b b minus c 1 into अच्छा डिटरमिनेंट में फाइंड करियो now 1 belongs to third row and first column so that negating the first column third row then remaining element of लिखिबा determinant हुए like as 1 1 a plus b plus c a plus b and b plus c. Now the determinant will be changes in 2 by 2 order so that principal determinant will be find out by multiplication of principal diagonal elements minus of diagonal elements from multiplication so that a b c a minus b b minus c this will be b plus c principal 1 into something 1 so this is something 1 into b plus c that is b plus c minus 1 into a plus b that is minus a minus b minus b plus b will be cancelled that is c minus a c minus a so the result will be a b c a minus b b minus c c minus a. This is the results of determinant. This is the RHS sides. So this is the answer of the determinant. Now we have to prove. You can prove this. Left hand sides is equal to right hand sides. The result. Now next example, next question. B plus C AC B plus C this is the question number 9 B third I B plus C AC B C plus A B B C plus A B B C plus A B then C A plus B and result will be equal to 4ABC for ABC B plus C AC again B C plus A B and C A plus B. This is the question and RHS side will be proved like it 4ABC 4ABC. देखो क्वेश्चन कौन अच्छी ना B plus C A C B C plus A B तो चिंता करो C A plus B देखे बार अच्छी कहते हैं ना B 4ABC इटे देखिए को ना मैक्सिमम 0 कन्वर्ट करवा एनी रो और एनी कॉलम प्रॉपर्टी यूज करवा इटे होची B इटे B ताले कॉलम 1 को चेंजेस करबी कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 सिमिलरली अच्छा कॉलम 1 चेंजेस करबा अच्छा ये भी C 0 है so that now column 1 can changes
column 1 minus column 3. column 1 can be changed as column 1 minus column 3. देखो ये b b ले 0 है जिने so that column 1 को changes करके column 1 minus column 3. then return will be b plus c minus c, b minus b, b minus b, and c minus a minus b. and the draw sorry column 2 and column 3 will be same like a c plus a c, c b a plus b. and this is the all determinants. So now solve this like this. The plus c minus c cancel, that is b a c minus b plus b, that is 0. Now c plus a b and c minus a minus b, also c a plus b. देखो now expanding करि परिबो तुमे यूजिंग column 1 को यूज करके expanding करि परिबो, or you can convert like this column 1 plus column 3 ऐड कर ले आया कौन b plus c b c तो चेंजेस करे दरकार नहीं. now expanding करिबा, now expanding along column 1 को लेके हम एक्सपेंडिंग करिबा. जे column 1 ले की अछि ना b 0 c minus a minus b, so that first second this side number to plus minus plus, so that so कौन अछि ना b into the b belongs to first row and first column, so the remaining element here is c plus a b c a plus b. अच्छा 0 into something 0 so not be taking, and then again last element will be c minus a minus b. the c minus a minus b belongs to third row first column, then remaining element will be ac c plus a b c plus a b. देखो ना इसको सॉल्व करियो, इन सॉल्व करियो the principal diagonal element multiplication minus of diagonal, it is principal diagonal element minus of diagonal, b into c plus a plus b minus bc plus c minus a minus b, principal diagonal element multiplication minus of diagonal element from multiplication, like as a b minus c square minus ac. अच्छा ताको तुमे एक्सपेंडिंग करिवो by multiplication, like as b into something, it is c minus a minus b into this part, then you can solve this and find the result like as 4abc. This is the process to find the determinant value of this, and you have to prove this equal to solve karibo 5 upon 4abc.